So good evening once again to all of you who have just joined in the last 1 minute, and we'll be continuing our session with plate tectonics. Okay. See, this is a very important topic as we have seen in the last two classes also. Uh, what this topic basically is about is when we speak about landforms, how they formed, how volcanism occurred, how mountain building happened. Now, this becomes the entire basis of geomorphology, which is a stream of geography which revolves around lithospheric formation. Lithosphere is made up of multiple landforms, right? And plate tectonics has been very popular with the UPSC and various state services examinations across India, and one of the most asked topics in the exam. Okay, so study this topic well and pay full attention in the class and watch the recording in case you have any doubt, because this will also become one of the major foundation stones for you to understand other landforms. We'll be talking about glaciation landforms in the future. We'll be talking about landforms of the deserts, coastal landforms, riverine landforms. So the entire basis is plate tectonics, and the more you understand this topic fundamentally, it helps you in the various subtopics of geomorphology. Okay, right? Now, yesterday we have seen how Indian plate collided with Eurasian plate and created Himalayas, right? The fold mountains of Himalayas. Uh, this is one example which we have given about continent-continent convergence. Another example is of Alps mountains. Hmm? Alps mountains. Now this is another prime example of continent-continent convergence. Okay, we know where is Alps. It is in southeastern Europe, primarily, little away from Central Europe towards west and south, and located in the countries of Switzerland, Romania. Many offshoots of Alps mountains also exist in Italy, some in Greece also. Okay, and there are many offshoots existing in France as well. Okay, so spread in around 8 countries of Europe. Okay, Alps mountains, right? So one of the most famous tourist destination globally, and at the same time, it is one of the alpine mountains belonging to the recent orogeny. Okay, so हम यहाँ एक word use कर रहे हैं orogeny. Orogeny is the word which we use for mountain building. Okay, mountain building. The single word is orogeny. Now, similar to Himalayas, Alps mountains also formed nearly 30 million years ago. Okay. Now, how these mountains have formed is convergence of African plate with Eurasian plate. African plate with Eurasian plate. Okay. Now, there have been a lot of studies which have been conducted on mountain building of Alps, and even before Alfred Wegener proposed the continental drift theory in 1912, nearly 40 years before that, in the 1870s,
There were two American geomorphologists, okay, in the 1870s named James Hall and James Dana. The two American geomorphologists. They researched a lot on how Alps formed, the history of the Alps in terms of mountain building. Okay, James Hall and James Dana were in fact one of the pioneers in studying horizontal movement. They were one of the pioneers in studying horizontal movement on the surface of the earth. Okay, and they were the ones who clearly stated that yes, horizontal movement is a reality. They called it a reality, and the horizontal movement on the surface of the earth is also closely linked to mountain building as well as volcanism as well as rift valley formation. We'll look into these things later on. So they appreciated and they accepted the fact that horizontal movement on the surface of the earth is linked to landforms. Now, apart from these two, there's another geologist. He was, so they are number one. Now, he was named Edward Suez, spelled as Edward. Okay, Edward Suez. Now, Edward Suez was an Austrian. Who was he? He was an Austrian geoscientist. You can call him geomorphologist and geologist also. And Edward Suez, in the same time period, between 1860s to 1870s, they studied horizontal movement on the surface of the earth. In fact, they were also working on the same theory of how horizontal movement is able to create landforms. Okay, so he was also one of the geoscientists who contributed and appreciated the fact that there is horizontal movement. And he has been also called, Edward Suez has also been called an expert on studying geography of the Alps. So he has been called expert on studying geography of the Alps. Okay, Edward Suez. And nearly 20 years he devoted from 1850s to 1870s about studying how Alps formed, and he also hypothesized the supercontinent Gondwana. Okay, अब ये supercontinent की बात जो एल्फ्रेड वेगनर ने आफ्टर 40-50 years बोली 1912 में, बट स्टडीज पहले से ही शुरू हो गई. हम लोग क्यों एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को पायनियर बोलते हैं? बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट इन बेसिकली प्रेजेंटिंग द हाइपोथेसिस ग्लोबली. सो एक ग्लोबल अपील था एल्फ्रेड वेगनर का कि यस, आई हैव कम आउट विद समथिंग एंड दिस इज इट, एंड दिस इज व्हाट is important for geomorphology, and continental drift as per Alfred Wegener is a reality. But studies have been going on before. And number three person, geoscientist who contributed in the same time period was a Swiss geoscientist. Now, his name was Amans Gresley. Amans Gresley. Now, Amans Gresley has been considered as one of the major founders of modern map making. Okay,
modern map making, and he has spent a lot of time in studying different rock layers and studying different layers of the earth also, the interior of the earth, and he's been one of the experts in studying volcanic rocks as well. And like Edward Suez, he also spent a lot of time studying the history of the Alps, from the point of view of geography. Okay. Now, Amans Gresley and Edward Suez together, they have also said the same thing as conveyed by James Hall and James Dana. And horizontal movement is a reality and mountain building is closely linked. So it was not just in America in 1870s that this study on the Alps was linked to horizontal movement. This also basically was originating in Europe, okay? So from Switzerland and Austria, okay? So Switzerland and Austria both have Alps mountains. So these people became more closer to the studies on the Alps because they belong to the same region where Alps was Alps were existing, right? Please write up few lines on the beginning of the study of horizontal movement. Ready? In the 1870s, horizontal movement on the surface of the earth, horizontal movement on the surface of the earth was accepted as a reality, was accepted as a reality by multiple geomorphologists and geoscientists and geoscientists. Multiple geomorphologists and geoscientists, comma, among whom the work of James Hall, comma, James Dana, James Hall, comma, James Dana, has been phenomenal. Full stop. These American geomorphologists, along with Swiss geoscientist Amans Gresley, Swiss geoscientist Amans Gresley, and Austrian geoscientist James Hall and James Dana, comma, Swiss geoscientist Amans Gresley. सब बोर्ड पे लिखा है मैंने, स्पेलिंग वहां से देखो, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी है ना, देखिए बोर्ड पे, अभी तो मैं पढ़ा रहा था ना इसको. Swiss geoscientist Amans Gresley and Austrian geoscientist Edward Suez. And Austrian geoscientist Edward Suez. ये बोर्ड पे लिखा है ना प्रताप, नहीं दिख रहा है क्या? SU, हाँ, Suez, yes, it is U. Austrian geoscientist Edward Suez conveyed that mountain building
comma, volcanism, mountain building, comma, volcanism are closely linked to horizontal movement on the surface of the earth, are closely linked to horizontal movement on the surface of the earth, horizontal movement on the surface of the earth, full stop. Moreover, Edward Suez spent many years between 1850s to 1870s, spent many years between 1850s to 1870s studying about the history on the formation of the Alps, studying about the history on the formation of the Alps. ALPS. Okay. Now, what these people said was that there is a geosyncline. This is a word they used. That mountain building basically begins from a geosyncline. Okay. Now, according to James Hall, James Dana, even Edward Suez and Amans Gresley, any mountain building becomes a reality after it starts with a depressed land, which is called geosyncline. Okay. अब देखिए इसका वर्ड का क्या मतलब है. Geo means earth, syncline means depressed land. Okay. Means a depressed land on the surface of the earth. Okay. एक साइन वेव आपने देखी है ना, साइन वेव पता है आपको, साइन वेव ऐसा ही दिखता है ना. तो साइन वेव में ये जो रेज्ड पोर्शन है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और ये जो डिप्रेस्ड वेव है दिस इज कॉल्ड सिंक्लाइन. और उसी सिंक्लाइन को हमने जियो सिंक्लाइन वर्ड में भी यूज किया है कि अ डिप्रेस्ड लैंड मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ अकॉर्डिंग टू जेम्स हॉल एंड जेम्स राना, ये जो जियो सिंक्लाइन होता है दिस इज समवेयर trapped between two huge continental plates. Okay, let's say there is a plate on this side, plate 1, continental plate 1, and there is a plate on this side which is continental plate 2. Okay, and assuming that continental plate 2 in this case is pushing the geosyncline towards continental plate 1. Okay, मतलब they are about to collide. अब यहां पे मैंने इसको बड़ा बनाया है जियोसिंक्लाइन को, बट
As per the American geoscientists and even Austrian as well as Swiss, what they said was that a and narrow, shallow and narrow structure exists between two continental plates. Between two continental plates. और ये shallow and narrow structure जो होता है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि सेडिमेंट डिपॉजिशन होगा. पहले यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे as the continental plate 2 keeps on pushing. यहीं से सेडिमेंट निकल के यहाँ पे आएगा. Okay. And since the geosyncline is pushing continental plate 1 also, right? तो सेडिमेंट दोनों से मिलेगा. तो पहला स्टेज ये है कि sediment deposition will occur, and as the two plates keep on coming closer, यही sediment जो deposit हुआ है geosyncline में, यही sediment compact होके क्या बनाएगा? Fold mountains. ठीक है, fold mountains. लेकिन जहां sediment deposition होगा वो एक depressed structure होगा between the two plates, and as the plates come closer, the sediments from the two plates, because both plates are made up of granite, and these sediments will get collected in the geosyncline, and with further movement of continental plate 2 towards the geosyncline and geosyncline pushing continental plate 1, तो फोर्स लग रही है और इसकी वजह से जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है it will be compacted and it is sandwiched between two plates, और वही कॉम्पैक्शन की वजह से वहां पे क्या बनेंगी? फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है ना? अब ये देखिए, दिस इज आवर जियोसिंक्लाइन. यहां पे पहले क्या हुआ? sediment deposition, and this sediment deposition, so this is one. सेकेंड स्टेज में क्या होगा? यही जियोसिंक्लाइन पे there will be increase in compaction, right? और इसी इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन की वजह से ये जो सेडिमेंट्स हैं ये किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू फोल्ड माउंटेन्स. दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, राइट? यहां से पुश तो यहां से आ रहा है, लेकिन ये सैंडविच हो गया ये जियोसिंक्लाइन दो प्लेट्स के बीच में. यहाँ प्लेट 1 है और यहाँ पे क्या है? प्लेट 2. तो कॉम्पैक्शन के साथ धीरे धीरे सेडिमेंट्स विल हैव नो अदर वे टू एक्सपैंड अदर देन वर्टिकल, तो ऊपर ही जाएगा. इट इज लाइक फोल्डिंग. तो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये भी, तो यहां पे माउंटेन्स बन जाएंगे. ओके. अब ये जियोसिंक्लाइन का फंडा क्यों आया, उसका भी कारण है कि दे वर स्टडीइंग एल्प्स. तो एल्प्स जब वो स्टडी कर रहे थे, so what they found out was that there is a depressed shallow and narrow structure existing between Africa in the south and Eurasia in the north. Okay, देखिए कैसे. We have seen the continental drift theory made the diagram which was proposed by Alfred Wegener. Remember that? उसमें भी अफ्रीका कहां पे था? सदर्न हेमिस्फीयर में ही था ना? यस. सो अफ्रीका वाज आल्सो इन गोंडवाना लैंड. तो हुआ क्या? सिंस इंडियन प्लेट आल्सो मूव्ड नॉर्थवर्ड
After crossing equator, it collided with the Eurasian plate. तो इंडियन प्लेट ऊपर जा रहा था और इधर भी अफ्रीकन प्लेट was also moving northward. Okay. In fact, African plate was completely in the southern hemisphere, which is called as Gondwana land. लेकिन आज की डेट में जब आप देखते हैं अफ्रीका को, तो half of Africa is above equator and nearly half is south of equator, है ना? तो ये कैसे पहुंचा? नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से. बट पहले सब कुछ, द एंटायर लैंड मास, even as per the diagram of Alfred Wegener on continental drift theory, the entire landmass of Africa was in the southern hemisphere. ठीक. अब ऊपर क्या था? ऊपर था यूरेशिया, यूरोपियन पार्ट ऑफ, ठीक है ना, यूरोपियन पार्ट ऑफ यूरेशिया ऊपर था. और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, आई एम मार्किंग विद ब्लू कलर, ये जो रीजन है, ये देख रहे हैं रीजन, ये तो एक वाटर बॉडी है, बीच में वाटर बॉडी है. अब ये जो रीजन है, हमने एक और चीज पढ़ी थी कल, वी हैव रेड अबाउट टेथिस सी, रिमेंबर? टेथिस सी वाज देयर lying between Indian plate in the south and Eurasian plate in the north. तो यहां पे जो टेथिस सी था, कहां पे? बिटवीन इंडिया एंड, ये इंडिया है, इंडियन प्लेट, एंड ये जो यूरेशियन पार्ट है, जो एशियन साइड ऑफ यूरेशिया है, यहां पे जो टेथिस सी था, दैट वाज ब्रॉडर एंड डीपर. दिस टेथिस सी है. ओके, ये देखिए, ये जो पूरा बेल्ट था, that was much broader and deeper. But this Tethys Sea also extended to Africa, अफ्रीका के नॉर्थ में. लेकिन यहां पे जो टेथिस सी था, that was as per James Hall and James Rana, it was shallow and narrow. This Tethys Sea between Africa and Eurasia was shallow and narrow. पानी इसमें भी था लेकिन डेप्थ कम थी. बट यहां पे ये टेथिस सी बड़ा था. अब आज की डेट में दिस शैलो एंड नैरो टेथिस सी बिटवीन अफ्रीका एंड यूरेशिया हैज बिकम मेडिटेरेनियन सी, है ना. और ये जो टेथिस सी वाज देयर बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इट हैज बिकम इंडियन ओशन, है कि नहीं? यही है, इंडियन ओशन है इंडिया के अराउंड. तो ये जो टेथिस सी था शैलो एंड नैरो, तो एज African plate continued its northward search, northward slow movement, what it did was it compressed the narrow and shallow Tethys Sea. तो क्या होने लगा, जो sediment deposition है, that started, यहाँ पे sediment deposition शुरू हो गया. I'm showing in yellow color. तो सेडिमेंट डिपोजिशन ने क्या किया, दिस येलो कलर है सेडिमेंट्स, कि ये जो थोड़ा सा पानी बचा था नैरो एंड शैलो टेथिस सी में, इसको भी कंज्यूम कर लिया. कंज्यूम मतलब आप एक शैलो वाटर बॉडी में अगर पाउडरी रॉक को डालते रहेंगे या मिट्टी को डालते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे सिर्फ मिट्टी रह जाएगी, पानी
नहीं बचेगा, राइट? तो सेडिमेंट डिपोजिशन होता गया होता गया होता गया, एंड दिस शैलो एंड नैरो टेथिस सी डिड नॉट रिमेन अ वाटर बॉडी एनीमोर। यहां पे सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ, दोनों की प्लेट के फ्रेगमेंट्स यहां पे गिरे, इसका भी फ्रेगमेंट गिरा, अफ्रीकन प्लेट का भी गिरा, और किसका, यूरेशियन प्लेट के फ्रेगमेंट्स भी गिरे, राइट? तो ये जो बीच में ट्रैप हो गया, इसी को जेम्स हॉल एंड जेम्स डाना ने बोला कि दिस इज, they called it geosyncline. Geosyncline एल्प्स की थ्योरी के में जो इसका नाम दिया है वो जियोसिंक्लाइन क्या है? इट इज नथिंग बट shallow and narrow टेथिस सी sandwiched between African plate in the south and Eurasian plate in the north. और इसी जियोसिंक्लाइन में the sediments compacted, okay, sediments compacted to form fold mountains. Sediments compacted to form fold mountains. अब ये जो फोल्ड माउंटेन्स आप देखते हैं, कहां मिलती हैं हमको फोल्ड माउंटेन्स? सदर्न यूरोप में, बिल्कुल, राइट? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ, ये कब हुआ? दिस एक्टिविटी टुक प्लेस 13 मिलियन ईयर्स अगो। राइट? तो थोड़ा सा लैंडफॉर्म जो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड है आज की डेट में आप देखते हैं, वो भी चेंज होता गया, राइट? अब हमारी जो ये माउंटेन्स हैं वो हमको मिलती हैं, आई एम ड्रॉइंग इन द नेक्स्ट पेज, दिस इज अफ्रीका, और जो हम चेंज इन लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर आप एटलस में देखेंगे यूरोप के मैप में, तो यू कैन सी दैट यूरोप लुक्स लाइक दिस, ओके? You see these two peninsulas here. Can you look them in the atlas? ये देख रहे हैं आप 1 and 2? ये कौन से कंट्रीज हैं? If you look in the atlas, ये कौन से कंट्रीज हैं? कौन सी कंट्रीज हैं ये? इटली एंड ग्रीस। एटलस खोली हुई है ना सब में, इटली एंड ग्रीस, राइट? अब हमारी जो फोल्ड माउंटेन्स हैं एल्प्स की, वो आपको हर जगह मिलेंगी। यस, देख सकते हैं एल्प्स लिखा है वहां पे, लिखा है नहीं लिखा है? फिजिकल मैप ऑफ यूरोप में, यस? सबने एटलस खोली हुई है? So you see, you can see कार्पेथियन लिखा होगा, एल्प्स के नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो, कैन यू सी कार्पेथियन माउंटेन्स? इटली और ग्रीस में देखिए, कैन यू सी पिंडस माउंटेन्स एंड दिनारिक एल्प्स? इस पेनिनसुला में कैन यू सी पिंडस माउंटेन्स? मिला पिंडस फिजिकल मैप ऑफ यूरोप में? मिल गया पिंडस? कैन यू ऑल्सो सी
Dinaric Alps, और थोड़ा सा फ्रांस की तरफ जाएंगे तो here can you also see Pyrenees, Pyrenees, और इटली में can you also see Pennines of Italy, Pyrenees of France. Can you locate all of them? Pindus Mountains, Dinaric Alps. ठीक है ना? तो Pindus Mountains you can see in Greece. Pennines you can see in Italy. You can see Carpathian Mountains. कहाँ पे हैं Carpathian Mountains? They basically stretch from Czech Republic. There's a country called Czech Republic, and they are also found, these mountains, they are also found in Romania. Carpathian Mountains. You see Dinaric Alps. Can you locate Adriatic Sea? Locate कर सकते हैं एटलस में? Adriatic Sea. Can you locate Aegean Sea? Aegean Sea is between the two peninsulas here, right? यहीं पे है ना Aegean. Can you locate both of them? Adriatic Sea and Aegean Sea? मिल गया? एजेंसी नहीं मिला? ग्रीस लोकेट करो, सॉरी ग्रीस लोकेट करो. कैन यू सी ग्रीस एंड कैन यू सी टर्की? ग्रीस और टर्की के बीच में देखिए एजियन मिला. ठीक है, ओके. कैन यू लोकेट बॉस्निया? कंट्री बॉस्निया. बॉस्निया, अल्बानिया, छोटे छोटे कंट्रीज हैं. एड्रियाटिक सी के वेस्ट में देखिए, ईस्ट में देखिए, सॉरी, एड्रियाटिक सी के ईस्ट में क्रोएशिया लोकेट कर सकते हैं. क्रोएशिया, एड्रियाटिक सी के ईस्ट में क्रोएशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनेग्रो. कैन यू सी अल्बानिया? मिला? तो इटली और बॉस्निया, क्रोएशिया के बीच में एड्रियाटिक सी है ना? यस. मिल गया? So Dinaric Alps are basically extending into Bosnia, Montenegro. You can locate these countries, right? Dinaric Alps की लोकेशन के लिए. ठीक है. So ये सब Alps हैं basically. So why I gave you those examples were because they all are Alps. Carpathian, Pindus, Dinaric, Pennines, Pyrenees.
पूरा फैला हुआ है। हुँ? और ये माउंटेन्स कौन सी माउंटेन्स हैं? एल्प्स, दे आर बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स। क्या है? Fold mountains formed as a result of convergence of African plate with Eurasian plate with a narrow and shallow geosyncline trapped in between. अब आप देखते हैं ये जो हिमालयास हमारी बनी, हिमालयास आर बेसिकली they are near parallel mountain ranges formed as a result of Indian plate colliding with Eurasian plate, right? लेकिन एल्प्स कैसा है? So एल्प्स कैसा है? दे आर रेडियल माउंटेन्स। रेडियल माउंटेन्स का मतलब है कि एक सेंट्रल नॉट है। सेंट्रल नॉट के अराउंड आपकी इस नॉट से मल्टीपल माउंटेन्स रेडिएट आउट करते हैं। यू सी हाउ माउंटेन्स आर? सेंट्रल नॉट का मतलब है एक सेंट्रल पॉइंट है और उसके चारों तरफ यू कैन सी multiple mountains radiating out. So what are Alps? Alps are basically radial mountains. But Himalayas, what are Himalayas? Himalayas are basically they exist in the form of three near parallel ranges. Near parallel. I'm not saying exactly parallel. Okay, we'll study when we study Himalayas in detail. थोड़ा Indian geography में you will see. So south में क्या है? Indian plate है और north में क्या है? Eurasian plate. उसके बीच में we see they are Himalayas are near parallel mountain range. ठीक है ना? Near parallel mountain range. बट दोनों में जो चीज कॉमन है वो ये है कि बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एंड बोथ सिंस both belong to the same time period, both have formed parallelly 30 million years ago and they have been clubbed in a single geological scale which has been called as alpine orogeny. इसका नाम दिया है alpine orogeny, although alpine orogeny में हिमालयास भी है, लेकिन स्टडीज एल्प्स पे बहुत ज्यादा डीप हुई हैं because Europe has been known for technological research for many years and they have been advanced. जहां आज की दौर में कंट्रीज 100 इयर्स के बाद पहुंचे हैं, यूरोप पहले ही पहुंच गया था उस लेवल पे, नो? तो एल्पाइन ओरोजेनी का नाम एल्पाइन ओरोजेनी, इट्स अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच मींस कि इस टाइम पे हमारी यंग माउंटेन्स बनी थी, दोनों एल्प्स एज वेल एज हिमालयास. ओके, एल्प्स एज वेल एज हिमालयास. So both are fold mountains, and since both are fold mountains, we know that Alps as well as Himalayas are non-volcanic. Yes, दोनों ही क्या है? Non-volcanic. तो हिमालयास को हम क्लब करते हैं कैटेगरी में, उसको हम बोलते हैं हिमालयास. जैसे ये रेडियल माउंटेन्स हैं, हिमालयास आर कॉल्ड लीनियर माउंटेन्स. एक लाइन में
माउंटेन्स बन गई. तो they are not radial like Alps, but they are simply linear mountains. Alps क्या है? Radial mountains. ये डायग्राम बना लिया? यस? बन गया डायग्राम? Please write down. A shallow and narrow Tethys Sea was trapped between a shallow and narrow Tethys Sea was trapped between African plate in the south and Eurasian plate in the north, in the form of African plate in the south and Eurasian plate in the north, in the form of geosyncline, in the form of geosyncline. Full stop. And Eurasian plate in the north. EUR Eurasian, ठीक है ना? In the north. Around 50 million years ago, आगे लिखे, around 50 million years ago, as the Indian plate advanced northward, northeastward, as the Indian plate advanced northeastward, towards Asian portion of Eurasian plate, towards Asian portion of Eurasian plate, Asian portion of Eurasian plate, comma, at the same time, the African plate was pushing northward. African plate was pushing northward towards the European portion of Eurasian plate, towards European, Europe and then AN, European portion of Eurasian plate. So African plate was pushing northward towards European portion of Eurasian plate. Full stop. With the passage of geological time, sediments broke out from both the plates. Sediments broke, B-R-O-K-E, broke out from both the plates and consumed the shallow and narrow Tethys Sea. Consumed the shallow and narrow Tethys Sea.
Full stop. Ultimately, the sediments thus collected between the two plates, ultimately the sediments thus collected between the two plates, between the two plates, compacted to form fold mountains, compacted to form fold mountains in the form of Alps, fold mountain in the form of Alps, Alps, spread all across southern Europe, all across southern Europe, in the form of spread all across southern Europe in the form of Carpathian, comma, Pindus, Carpathian, comma, Pindus, comma, Dinaric Alps, Carpathian, comma, Pindus, comma, Dinaric Alps, comma, Pennines, Pennines, comma, Pennines, and Pyrenees, and Pyrenees. स्पेलिंग सारी लिखी है बोर्ड पे 1 2 3 4 5 में, ठीक है ना. एंड पायरेनीज, full stop. Alps mountains have formed as radial mountains. Alps mountains have formed as radial mountains radial mountains comma, seems to be emerging from a central knot, seems to be emerging from a central knot. ये जो सेंट्रल नॉट है ये आपको स्विट्जरलैंड में मिलता है. स्विट्जरलैंड में एल्प्स आर द हाईएस्ट. Seems to be emerging from a central knot and ultimately expanding in a radial manner, and ultimately expanding in a radial manner around the knot, KNOT, around the knot. Full stop. On the other hand, Himalayas, on the other hand, Himalayas are a linear range of mountains. Himalayas are a linear range of mountains linear range of mountains existing in the form of nearly three existing in the form of three near parallel ranges existing in the form of three
near parallel ranges at the interface of Indian and Eurasian plate. At the interface of Indian and Eurasian plate. Indian and Eurasian plate. Okay. Clear continent convergence? Now, coming to, so we have done three types of convergences until now, right? Ocean continent convergence. We have done ocean convergence. And we have also done continent convergence. Okay. Now, coming to diverging boundary, which is the second type of convergence called diverging boundary, right? देखिए, in the case of diverging boundary, it all begins from a single plate. एक प्लेट है. Now, beneath this plate in the asthenosphere, there are diverging convectional currents. There are diverging. देख रहे हो आप? एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज. 1 and 2. Now, this convectional current cycle number 1 is pushing the plate in the left direction, and the clockwise convectional currents number 2 is pushing the plate rightward, right? और बीच में ये एरिया को नोटिस करिए ध्यान से. ये देख रहे हैं आप ये एरिया? This area between the two convectional currents. Yes. इस एरिया में क्या हो रहा है कि you see these two arms, one this one and one this one. They both are taking the molten rock matter of the asthenosphere. In this region, they are pushing the molten rock matter upward. जा रहा है नहीं जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है? अब एक कन्वेक्शनल करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, अदर इज क्लॉकवाइज, और ये जो
एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कन्वेक्शन करंट्स का जो इनर आर्म है, इसका मूवमेंट अगर आप देखो तो इट इज ऑल मूविंग अप, इट इज पुशिंग द मैटर विच इज एग्जिस्टिंग हियर अपवर्ड्स. अब ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, ये एक जगह से आता है, ये आप देख रहे हो, बिटवीन दीज टू कन्वेक्शन करंट्स, दिस सेंट्रल रीजन, it is a pool of molten rock matter of asthenosphere which is called peridotite. हमको पता है the rock of asthenosphere is peridotite. तो ये जो पूल है, इसमें से जो molten matter है, because of two opposite convection currents, this matter is being pushed, this matter is being pushed upward. Yes, okay, ये पुश हो रहा है, और यही जो पुश है ये क्या करेगा, दिस पुश will ultimately create the crack in the plate, है ना, this will create the crack in the plate. धीरे धीरे with the passage of लंबा टाइम, जियोलॉजिकल टाइम, यहाँ पे क्रैक बनना शुरू होगा. लेकिन क्रैक बनने से पहले, just before the crack forms, because of this upward limb of molten matter, because of this upward limb of molten matter, what it is doing is it's pushing the plate upward continuously every day. For millions of years it will happen before a diverging boundary forms. तो ये क्या करेगा कि इस प्लेट में एक बल्ज लेके आएगा, एक बल्ज बनेगा ना यहाँ पे. यस, क्रैक से पहले बिकॉज ऑफ द पुश फ्रॉम डाउनवर्ड्स ये प्लेट ना बल्ज हो जाएगी, दिस प्लेट विल बी बल्ज्ड. तो with the passage of time this plate might look like this might look like this. इसी बल्ज को बोलते हैं, this bulge is called upwarped mountain. This bulge is called upwarped mountain. And the process of creation of the bulge is called upwarping. क्या बोलते हैं? Upwarping. And why this bulge has been created, why this upwarped mountain, is because of the push from the pool of the molten peridotite, the push of molten magma. ये नीचे से पुश कर रहा है, और ये जो आपने पूल ऑफ मोल्टन पेरिडोटाइट लिखा है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड मैंटल प्लूम. क्या नाम है इसका? मैंटल प्लूम. बल्ज पहले बन जाएगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा? क्रैक विल फॉर्म, एंड थ्रू दिस क्रैक ultimately
molten magma, which is molten peridotite in this case, will move up, and once it reaches the surface, it spreads, right? Now how it is reaching the surface? यहाँ पे यहाँ पे क्या है? There is a vent, pipe like structure बन जाता है. So this thick green color you're seeing, this is nothing but peridotite getting exposed to the atmosphere. तो ये spread होगा, this will spread over the upwarped mountain, और ये spread होके layer बनाने लगेगा with each event of volcanism. यहाँ layer बनेंगे ना? Yes? बल्ज के ऊपर लेयर बन रही है. किसकी लेयर बन रही है? Molten magma ultimately cooling down and solidifying as lava. इनको आप लावा शीट्स भी बोल सकते हैं. You can call them ridges. अब देखिए, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें एक कन्वर्जन होता है कि I'll come back to this diagram. I'll need a fresh page. Peridotite जो rock है, it is the rock of asthenosphere, right? When peridotite cools and solidifies, when peridotite cools and solidifies, it gets converted into basalt. किसमें convert हो जाता है? Basalt. Peridotite is a rock composed of three minerals we have seen, right? It is composed of quartz, mica, composed of feldspar, right? अब पेरिडोटाइट वो रॉक है जिसमें क्वार्ट्ज मतलब सिलिका डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है, इट इज लेस देन 40%. कितना कंटेंट है? लेस देन 40%. हमको पता है क्वार्ट्ज में कितना हो जाता है. क्वार्ट्ज में लेस देन इक्वल टू लगा दें, लेस देन इक्वल टू, वहां भी 40%, यहां कितना हो जाता है? 50%. Peridotite is also called rock of the mantle. ये mantle क्या है इस केस में? It is the asthenosphere, because asthenosphere is the outermost mantle. लेकिन जैसे ये सरफेस पे आती है molten form में, and when it begins to cool and solidify, it becomes higher in quartz content. और हमने एक और चीज देखी है कि ये हो गया सरफेस पे, so basalt is existing on the surface, right? So when quartz content increases, when SiO2 increases, what it implies is increase in fluidity of the rock.
means the rock becomes less viscous. Viscous मतलब thick, will not flow much. Less viscous means it will be little thinner and it will flow more. है कि नहीं? I'm so sorry. हाँ बोलो 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 बोलो. हाँ एक मिनट रुको रुको. हाँ रुक जाओ एक सेकंड. तो SiO2 कंटेंट जब इंक्रीज होता है तो हम ये बोल रहे हैं कि जो बसाल्ट है इट विल फ्लो मोर. ठीक है. नाउ यू सी peridotite has less than equal to 40% quartz content, basalt has up to 50%. Okay. Now when we talk about the rocks on the surface, जब peridotite का conversion होता है basalt में, तो एक तरीके से what we are trying to say is that peridotite does not exist on the surface. Peridotite does not exist on the surface of the earth. क्योंकि यही पेरिडोटाइट बन जाता है बसाल्ट. इसलिए इसको बोलते हैं रॉक ऑफ द मैंटल. क्या बोलते हैं? रॉक ऑफ द मैंटल. ओके. तो ये जो 50% सिलिका कंटेंट है, सिलिका डाइऑक्साइड कंटेंट है बसाल्ट में, ये भी किस कैटेगरी में आता है? It is basically half of the entire rock composition. ठीक है. तो basalt is a rock which after converting from peridotite flows on the surface. हमने एक चीज देखी थी. ठीक है. कि एंडेसाइट जो है, एंडेसाइट is a rock which is formed as a result of cooling and solidification of basalt. Okay. एंडेसाइट का जो फ्लूइडिटी था वो इतना कम हो गया था कि it was cooling and solidifying around the vent of the volcano. But basalt का क्या है कि basalt will not just accumulate around the vent of the volcano. Basalt will actually flow and form ridges. कैसा ridges बनाता है? ये वाला, ये देख रहे हैं? Ridges क्या है? Ridges are nothing but they are rounded hills. क्या है ridges? They are rounded hills. कोनिकल माउंटेन नहीं बनती, राउंडेड हिल्स बन जाते हैं. ओके. ठीक है. और इन्हीं राउंडेड हिल्स को लैंड पे रिजेस बोलते हैं. और अगर यही बसाल्टिक रिजेस आपके ओशन में बनते हैं तो दे आर कॉल्ड मिड ओशियानिक रिजेस. क्योंकि डाइवर्जेंस ओशन के नीचे भी होता है, डाइवर्जेंस लैंड पे भी होता है. लैंड पे सिंपली दे विल बी कॉल्ड रिजेस एंड इन द ओशन
if they are forming below the surface of the water, they are called mid-oceanic ridges. तो diverging boundary के केस में peridotite converts to basalt. Basalt cools and solidifies in the form of ridges. They spread over large distances and then solidify. इसलिए ये क्या बनाते हैं? लावा शीट्स. क्या बनाते हैं? शीट्स ऑफ लावा, लेयर अपॉन लेयर. एक लेयर बना, फिर इसके ऊपर there'll be another layer, then another layer. So different layers form. Okay. इसको we also call basaltic lava sheets. Ridges भी बोल दिया, lava sheets भी बोल दिया simply, but more specifically they are also called basaltic lava sheets. Because ultimately peridotite has converted to basalt. Write few lines on this, okay? Diverging boundary is formed as a result of diverging convectional currents, as a result of diverging convectional currents in the asthenosphere, diverging convectional currents in the asthenosphere full stop. The inward limb, the inward limb, which one? We are showing here the inward limb, this one, okay? The inward limb of both the currents pushes molten and volatile peridotite molten and volatile peridotite upwards full stop. Sir, molten and Volatile peridotite upwards full stop. When this push continues for a long period of geological time, when this push continues for long period of geological time, comma, a bulge or upwarped mountain, a bulge or upwarped mountain ऊपर, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा ना स्पेलिंग, ये देखिए UPWARPD, ये वाला, ये देखिए ये वाला, a bulge or upwarped mountain
is formed full stop. Subsequently, the continuous push by molten peridotite, the continuous push by molten peridotite creates crack in the plate, creates crack in the plate through which, crack in the plate through which, through which through which magma flows upwards, through which magma flows upwards and ultimately upwards and ultimately spreads above the upwarped mountain, spreads above the upwarped mountain in the form of, successive, in the form of successive layers of lava sheets, successive layers of lava sheets. Full stop. Eventually, after millions of years, the thickness of the sheets increases, which are then termed as ridges on the land surface, which are then termed as ridges on the land surface and mid-oceanic ridges on the ocean bed below the water surface, and mid-oceanic ridges on the ocean bed. Sir, mid or mid? Mid, MID, mid. Middle wala mid oceanic ridges on the ocean bed below the water surface. अब देखो इसका ये नाम कैसे पड़ा, ये जो मिड ओशियनिक रिज हमने लिखा है ना, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दैट इज अटलांटिक ओशन. इफ यू रिमेंबर हमने पैसिफिक ओशन की बात की थी दैट इट इज कॉल्ड द ओशन ऑफ कन्वर्जेंस. उसके ऑपोजिट में Atlantic Ocean is called as ocean of divergence, क्योंकि the mid-Atlantic Ocean is between North America and either Europe, right? This is Europe. और इसके साउथ में वी नो क्या है, अफ्रीका. तो ये जो मिडिल में है
ऊपर आप एक कंट्री देख सकते हैं जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड के पास देयर इज अनदर कंट्री कॉल्ड आयरलैंड, और आयरलैंड के बगल में व्हाट वी हैव इज यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, राइट। अब यहीं से एक एस शेप में डाइवर्जिंग बाउंड्री हमको मिलती है which nearly continues up to southern island of साउथ अमेरिका। इस सदर्न आइलैंड का नाम है फॉल्कलैंड। सदर्न आइलैंड का नाम है सदर्न आइलैंड, जो है उसका नाम है फॉल्कलैंड। तो अटलांटिक ओशन के मिड में, स्टार्टिंग फ्रॉम आइसलैंड एंड आयरलैंड इन द नॉर्थ, there is a S-shaped diverging boundary which runs up to the southern island of South America called Falkland Island. और ये जो S-shaped diverging boundary है, it is almost passing through the mid of Atlantic Ocean between North America in the west and Europe in the east and South America in the west and Africa in the east. और यहां पे हमको क्या मिलता है? रिजेस। क्या है यहां पे? कैसे बन गए रिजेस? बिकॉज मिड अटलांटिक ओशन इज अ ओशन ऑफ डाइवर्जेंस, मीनिंग यहां पे द प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि अटलांटिक ओशन बीच में से टूटा हुआ है because of diverging convectional currents, and one portion of the plate is moving away from the other portion of the plate. और इसकी वजह से क्या हुआ? Since the two plates are moving apart, बीच में से molten peridotite निकला, पहले बल्ज बन गया, फिर क्रैक के थ्रू वो ओशन बेड पे निकला, और ओशन बेड पे भी when the magma will come out, it will cool and solidify, क्योंकि वो water temperature काफी कम है compared to the high temperature inside the ionosphere. तो वो जब cool and solidify होता है तो क्या बनाता है? mid oceanic ridges. ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये क्या है? मिड ओशियानिक ridges. So what is Atlantic Ocean? Essentially, it is an ocean of divergence. What is mid-Atlantic Ocean? It is an ocean of divergence. Unlike Pacific Ocean, which is ocean of convergence. यहां से नाम पड़ा इसका मिड ओशियनिक ridges. ड्रॉ कर लो इस डायग्राम को. And here you write, क्या लिखेंगे यहाँ पे? Plates diverge, है ना? मतलब एक ही प्लेट है, बीच में से टूटती है, और जब वो टूटती है तो क्रैक जब बनता है तो पेरिडोटाइट
कन्वर्ट हो जाता है बसाल्ट में व्हेन इट रीचेस द सरफेस, एंड यही बसाल्ट, व्हाट डज इट फॉर्म? बसाल्टिक लावा शीट्स। लिख लीजिए 2 लाइन इसके ऊपर। ओके, ड्रॉ कर लिया डायग्राम? Please write. The mid-Atlantic Ocean, the mid-Atlantic Ocean is the ocean of divergence. Ocean is the ocean of divergence as the convectional currents in the asthenosphere, convectional currents in the asthenosphere are diverging in nature. Mid-Atlantic Ocean is the ocean of divergence as the convectional currents in the asthenosphere are diverging in nature. Are diverging in nature. The mid-oceanic ridges, आगे लिखिए, the mid-oceanic ridges are spread from North Atlantic Ocean to South Atlantic Ocean. Are spread from North Atlantic Ocean to South Atlantic Ocean in an S shape. In an S shape. From Iceland in the north to Falkland Island in the south. From Iceland in the north to Falkland Island in the south. Mild earthquake occurs only when magma shoots as lava on the surface of the earth. Magma shoots as mild earthquake only occurs when magma shoots as lava on the surface of the earth. आपने देखा ना, जब भी एक वॉल्केनो इरप्ट होती है ना, हल्का हल्का अर्थक्वेक आता है ना, न्यूज में देखा होगा आपने कभी। अर्थक्वेक ऐसा नहीं होगा जैसा प्लेट मूवमेंट की वजह से होता है जब दो प्लेट कोलाइड करती हैं, या फिर जब बसाल्ट converts to solid basalt converts to molten basalt beneath the surface of the earth. यहां पे सिर्फ वल्केनिज्म हो रहा है। तो वल्केनिज्म मतलब molten magma is shooting up as lava
तो माइल्ड अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे, दैट्स ऑल। यहाँ पे दो ही चीजें हैं डाइवर्जिंग बाउंड्री में जो आपको याद रखनी है, तीन चीजें इनफैक्ट। एक, बल्ज बनता है अपवार्प्ड माउंटेन। दूसरा, उसके ऊपर व्हाट यू गेट इज शीट्स ऑफ लावा, शीट्स ऑफ basaltic lava. And number three, whenever volcanism occurs, there'll be a mild earthquake. That's all. Okay? Yeah. So thank you for today.